औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, Transferee Court must issue notice parvee to the parties on receipt of the file transferred under administrative order as provided under. The petitioner instituted a suit for specific performance of a contract with permanent injunctions against the deceased respondent Gullan, who entered appearance and submitted her written statement. petitioner ने एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया और वो जो खातून थी वो उन्होंने रिटन स्टेटमेंट जमा कराई। शी आल्सो फाइल्ड अ सेपरेट सूट फॉर डिक्लेरेशन विद कॉन्सिक्वेंशनल रिलीफ। उस खातून ने डिक्लेरेशन का दावा भी कर दिया विच वाज contested by the present petitioner. Both the suits were consolidated and consolidated issues were framed. However, on 15/2/2021, the London Trial Court closed the right of the petitioner to lead evidence and dismissed his suit for want of evidence on the said date. petitioner जो है इस केस में उसका दावा जो है उन्होंने एविडेंस जो थे वो उसके राइट क्लोज कर दिया और सूट डिसमिस कर दिया गया। द पिटिशनर बीइंग एग्रीव्ड ऑफ द सेम प्रेफर्ड एन अपील बट रिमेन्ड अनसक्सेसफुल। उसने फर्स्ट एपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की लेकिन नाकाम रहा। It is an established and admitted fact on record that when under administrative order the case was transferred from one court to another court, no notice parvee was issued by the Transferee Court to the parties or their counsel, as is evident from the order dated 5/1/2021 which is reproduced as under. ये जनाब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और इसकी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर भी लाहौर हाई कोर्ट का जो है वो है 2022 यानी 2022 LHC 89 2022 LHC 89 और ये जस्टिस बिलाल हसन साहब ने इस केस को सुना है। 2022 LHC 89 में इसे नरेट किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब नोटिस पैरवी उनको भेजना चाहिए था जब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से ये दूसरी कोर्ट में जब केस ट्रांसफ़र हुआ, जिसको उन्होंने कहा कि ये देखें उसने लिखा भी हुआ है अदालत जज ने। टुडे इंस्टेंट केस वाज फिक्स फॉर एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ। एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू स्ट्राइक। सूट इज एडजर्न्ड। Absolute last opportunity is granted to the plaintiff to produce complete evidence. उन्होंने कहा जनाब कि आज केस फिक्स था और स्ट्राइक थी, सूट को अर्जन कर लिया और आखिरी मौका दिया जा रहा है प्लेंटिफ को कि वो एविडेंस करवाए। Instead of passing such an order giving absolute last opportunity, the London Trial Court ought to have issued the notices parvee to the parties because the case was transferred under administrative order and not under section 24(2) of the Code of Civil Procedure 1908, where the parties are directed to appear before the London Transferee Court, and if party fail to appear, then penal order can be passed against such party. However, here the case is not such, rather otherwise, as highlighted above, para 6 chapter 13 volume 1 of High Court Rules and Order provides, when a case is transferred by administrative order from one court to another, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किया जाए कि जनाब इस अदालत से अब उस अदालत में केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट जज करता है, ज़ाहिर है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट फ्रॉम विच इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग द पार्टीज रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र। तो जो जिस अदालत से वो केस ट्रांसफ़र होकर दूसरी अदालत में गया है, वो जो जज साहब हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो पार्टीज़ को इतला दें कि आपका नोटिस जारी करें कि जनाब आपका केस जो है वो ट्रांसफ़र होकर फ़लाँ कोर्ट में चला गया, एंड ऑफ द डेट ऑन विच दे शुड अपीयर बिफोर द कोर्ट टू विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, और उनको साथ तारीख भी बताई जाए उस नोटिस में कि उस तारीख को वहाँ पर पेश हों। The district judge passing the order of transfer
shall see that the records are sent to court concerned and parties informed of the date fixed with the least possible delay. डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि वो जब उन्होंने ऑर्डर किया है कि जनाब इस कोर्ट से दूसरी कोर्ट में केस ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वो इस चीज़ को भी देखेंगे कि जो डेट फिक्स की गई है उसकी जितनी जल्दी हो सकता है उनको इतला कर दी जाए पार्टीज़ को. व्हेन अ केस इज़ ट्रांसफर्ड बाय जुडिशियल ऑर्डर, द कोर्ट पासिंग द ऑर्डर शुड फिक्स अ डेट on which the parties should attend the court to which the case is transferred. अब यहां पर बात दूसरी आ गई. अगर तो जुडिशियल ऑर्डर के जरिए केस ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसमें डेट लिख दी जाती है और कोर्ट का नाम लिख दिया जाता है. However, in the present case, none of the requirements indicated in the above para 6 of the chapter 13 volume 1 of the High Court rules and order have been adhered to, because nothing is on record to suggest that court from which the case was transferred ever informed the parties to appear before the transferee court on such and such date. इस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के ज़रिए वो हुआ और वो उनको नहीं इतला दी गई कि किस अदालत में जाएं और किसके पास जाएं और क्या डेट है. रादर it is clear from the record that the case was transferred under administrative order without fixing a date to appear before the transferee court, and no information in this regard was imparted to the party. Thus, it was required by the learned transferee court to issue notice parvee to the parties and their counsel fixing a date to appear before it, but no such exercise has been done. In such scenario, what to speak of passing a penal order without putting the petitioner on caution has been held by the apex court of the country in a judgment reported as Moon Enterprises CNG Station Rawalpindi versus Sui Northern Gas Pipeline Limited through General Manager Rawalpindi and another 2020 SCMR 300. Thus, the said precedent being on different facts is not retracted in the instant case, and the ratio of the same has wrongly been appreciated by the learned subordinate court. This court, while dilating upon a case of almost identical facts wherein the defendant was proceeded against ex parte by the court where the suit was pending and was transferred to some other court under administrative order, and without issuing notice to him, he was proceeded against ex parte. ये भी एक केस है जी जिसमें जिस केस की हम बात कर रहे हैं उसी तरह का था. PLD 1975 लाहौर 879 में कहा गया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24A2 C.P.C and the relevant rule of High Court rules and order as referred the above, if the order of the learned district judge transferring the case had been passed in the presence of the absentee defendants, or they had been intimated in accordance with that order, then in case of their absence before the transferee court, they should be lawfully proceeded against ex parte. If the absentee defendant can join the proceeding at the subsequent stage even after ex parte order has been passed against him, as also held in Messrs. Landi Industrial Trading Stage Limited Karachi versus Government of West Pakistan through Excise and Taxation Officer 1970, then how it can be presumed that in the absence of any intimation duly furnished to him with regard to transfer of the case from one court to another, he can be proceeded against an ex parte simply on the basis of ex parte order already passed against him. His right to join future proceeding implies that after the transfer of the case from the court where such proceedings are pending, if the same have not been transferred in his presence or without intimation to him, then he cannot be proceeded against. And यानी अगर तो वो उस वक्त अदालत में मौजूद था और ये आर्डर हुए कि ये केस फलां कोर्ट में अब जा रहा है, तो फिर तो ठीक है. अगर नहीं है तो उसको फिर जिस कोर्ट से वो ट्रांसफ़र हुआ है वो ट्रांसफरी कोर्ट जो है वो नोटिस करेगी, उसके बगैर उसको एक्स पार्ट नहीं किया जा सकता. Pursuant of the above discussion, it can safely be held that the impugned order dismissing the suit for want of evidence, it is harsh in nature, especially when after transfer of the case
from one court to another court, the petitioner was not informed so as to enable him to produce his evidence, and even he was not warned to face the consequences in case of his failure to produce complete set of evidence. यानी कि उसको इतला ही नहीं थी। इन हालात में इस तरह का ऑर्डर बड़ा हार्श है। The crux of discussion above is that the revision petition in hand is allowed, impugn order, judgment and decrees are set aside, and case is remanded to the learned trial court, which will be deemed to be pending at the stage when the impugned order dated 15/2/2021 was passed, with the decision to afford two clear opportunities to the petitioner for production of his complete set of evidence. The parties are directed to appear before the learned trial court on this date. बहुत अच्छा फैसला जी। ये ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब का फैसला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए अगर केस एक अदालत से दूसरी अदालत में गया है, अगर तो उस वक़्त वो पार्टीज़ वहाँ मौजूद थी फिर तो ठीक है, अगर पार्टीज़ मौजूद नहीं थी तो फिर जो कोर्ट ट्रांसफरी कोर्ट है पैरवी करेगी। वैसे ही उसे करना चाहिए क्योंकि पता नहीं कोई वहाँ आया या नहीं आया जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए गया है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।